Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies and also revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 3, which is formulas and functions in Excel. So we will discuss about different formulas and functions जो हम calculations के लिए use करते हैं Excel के अंदर. So without wasting any time, let's start it. The name of our chapter is Formulas and Functions in Excel, and the topics which we will discuss in this chapter are understand Excel data types, name cell ranges, enter and use formulas, use cell referencing, use cell range, apply Excel functions, select ranges, and explore function categories. Now we have an activity which says observe the highlighted cell in the spreadsheet and write down the range address जो represent करता है हमारे highlighted cells को. तो as we can see यहाँ पे highlighted cells हमारे कौन से हैं, ये वाले, और इसमें अगर हमें range बतानी है उनको तो हम देखेंगे हमारा very first cell and the very last cell. तो यहाँ पे range क्या हो जाएगी A4, और रेंज को हम इन कॉलम से सेपरेट करते हैं. सो A4 to D6, ये हमारा रेंज एड्रेस हो गया. नाउ एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोग्राम्स जो अवेलेबल है और प्रोवाइड करते हैं न्यूमरस वेज टू वर्क विद डेटा. इन दिस चैप्टर हम लोग डिस्कवर करेंगे कि हम फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं इन एक्सेल. नाउ टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल. एक्सेल अलाउ करता है हमें टू एंटर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ डेटा इनटू अ स्प्रेडशीट. तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आते हैं लेबल्स. लेबल्स कुछ इसेंशियल होते हैं हमारे एक्सेल के अंदर and they are used to describe information within your spreadsheet, जैसे columns and row headings. तो इनको डिफाइन करने के लिए हमारे को लेबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. Now लेबल कंसिस्ट करता है टेक्स्ट दैट इज नॉट अ नंबर, फोन नंबर, फॉर्मूला एक्सेट्रा. कैलकुलेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन लेबल्स. हम लेबल्स में कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते एंड दे आर अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ अ सेल. नेक्स्ट आता है हमारे पास वैल्यूज या फिर नंबर्स. नाउ वैल्यूज आर द नंबर्स जिनको हम यूज करते हैं फॉर mathematical calculations, and this type of data include करता है digits 0 to 9 and may also contain special characters like this. Percent values are aligned to the right within a cell. हमने देखा जो टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं वो सेल के अंदर लेफ्ट अलाइन होती हैं एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो सेल के अंदर राइट अलाइन होती हैं. फिर आता है फॉर्मूला. फॉर्मूला एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको यूज किया जाता है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन नंबर्स विद इन अ सिंगल सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स. फॉर्मूलाज हमेशा बिगिन होते हैं विद इक्वल साइन. फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू A2 प्लस B2. तो ये इक्वल्स टू हमें ये बताता है कि ये एक फॉर्मूला है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड अ वैल्यू इन एन एक्सेल सेल. तो लेबल होते हैं हमारे वर्ड्स या फिर टेक्सचुअल डेटा, लेकिन वैल्यूज हमारी नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कैलकुलेशंस के अंदर काम आती है. नाउ मेथड्स क्या होता है एंटर करने का फॉर्मूला को. तो दो प्राइमरी वेज होते हैं जिनसे हम फॉर्मूला एंटर करते हैं इनटू आवर वर्कशीट. तो सबसे पहले होता है डायरेक्टली टाइपिंग इनटू अ सेल, यानी कि आपको टाइपिंग शुरू कर देनी है विद इक्वल साइन फॉलोड बाय द फॉर्मूला विद इन द पैरेंथेसिस. आफ्टर टाइपिंग द फॉर्मूला आप एंटर की को प्रेस कर सकते हो एंड द रिजल्ट विल अपीयर विद इन द सेल. सेकंड हमारे पास होता है यूजिंग द फॉर्मूला बार, यानी कि आप डिजायर्ड सेल को सिलेक्ट करोगे एंड टाइप करोगे फॉर्मूला इनटू द फॉर्मूला बार. प्रेस द एंटर की ऑन योर कीबोर्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट. नाउ अंडरस्टैंडिंग सेल रेंज, यानी कि एक रेंज वो ग्रुप होता है कॉन्टिन्यूअस सेल्स का. तो जब भी आप चूज करते हो एक रेंज इन अ वर्कशीट, एक रेक्टेंगल बन जाता है विद इन द सेल रेंज. नाउ वी कैन डू कैलकुलेशंस ऑन मोर देन वन सेल एट वंस. ये जो एड्रेस होता है रेंज का इज मेड अप ऑफ एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल एंड द सेल इन द first cell and the last cell in the range, which are separated by column. For example, if we choose cells from B2 to E3, तो range address हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे. Selecting range in a worksheet. Worksheet के अंदर range को कैसे select करते हैं हम? दो तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग अ माउस एंड यूजिंग शिफ्ट की. तो माउस को यूज करेंगे तो हम पहले सेल पे क्लिक करेंगे एंड देन विच यू वांट टू इंक्लूड इन द रेंज, उसके बाद में आप क्या करोगे, होल्ड करके ड्रैग करोगे माउस को टू सेलेक्ट द सेल्स. यू विल नोट दैट एवरी सेल इन द सिलेक्टेड ग्रुप वो हाईलाइट हो जाएगा एक्सेप्ट द एक्टिव सेल. नाउ यूजिंग द कीबोर्ड, आपको क्या करना है, शिफ्ट की का यूज करना है ऑन योर कीबोर्ड एंड प्रेस द एरो की टू मेक द सिलेक्शन. There is also a shortcut की अगर आपको entire worksheet select करनी है, so which is Control plus A. Now naming a cell range. Excel हमारी हेल्प करता है कि हम ग्रुप करें सेल्स को या और फिर उनको एक नेम प्रोवाइड करें. नाउ इन फॉर्मूलाज द नेम कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सेल एड्रेस. टू गिव अ नेम टू द रेंज ऑफ सेल यू नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. जैसे आपको पहले रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना है जिसको आप एक नेम देना चाहते हो.
फिर आप क्लिक करोगे फॉर्मूला टैब पे फ्रॉम द रिबन, क्लिक ऑन द डिफाइन नेम कमांड अंडर द डिफाइन नेम ग्रुप एंड द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. So this is your define name dialog, but this is your define name option. फिर आप टाइप करोगे नेम एंड क्लिक कर दोगे ओके बटन पे, तो जो असाइंड नेम है वो अपीयर हो जाएगा इन द नेम बॉक्स. नाउ वी कैन यूज दिस नेम इन द प्लेस ऑफ सेल एड्रेस इन द फॉर्मूलाज. सेल रेफरेंसिंग क्या होता है इन फॉर्मूलाज एंड इट्स टाइप. तो सेल रेफरेंस एक सेल एड्रेस होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला के अंदर टू पॉइंट अ स्पेसिफिक सेल. देयर कैन बी रेफरेंसेस टू अदर सेल्स इन अ फॉर्मूला. व्हेन दिस हैपेंस तो रिजल्ट जो होता है फॉर्मूला का वो डिपेंड करता है ऑन व्हाट्स इन द सेल it refers to. Now if you change anything in the cell that are linked, the result will also change. To see how this works, आपको enter करना है टेल in cell A1. Now select करना है आपको A2 and type करना है equals to A1 into 2 and press करना है enter की को. Now जो value है cell A2 के अंदर वो हो जाएगी 20. If you change the value in cell A1 from 10 to any value, तो जो value है A2 में वो भी automatically change हो जाएगी. सेल रेफरेंस हेल्प करता है लॉट जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से वर्क कर रहे होते हैं. एक्सेल यूज करता है 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल रेफरेंसेस, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड. रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है, एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट यूज करता है रिलेटिव रेफरेंसिंग को इन वर्कबुक दैट वर्क्स रिलेटिव टू द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल, if you have 3 columns A, B, C and you want to add the values each in cell 4 C4 to the value corresponding to cell A4 and finally multiply करना है आपको result को by the value in cell B4, then आप enter करोगे formula in D4 as this. Copy paste the remaining cells of column D. Excel makes the relevant changes in cell references automatically. This means जो Excel references हैं relative to the location of the cell. This is relative referencing. Absolute referencing में क्या होता है, यहाँ पे जो वर्कबुक है वो रेफर करती है टू द सेम सेल नो मैटर वेयर यू कॉपी और पेस्ट सेल्स. यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्सेल यहाँ पे डॉलर साइन का यूज करता है टू इंडिकेट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. So absolute referencing for J2 would be this. And you may notice that both column and row needs dollar sign for absolute reference. For example, अगर आप apply करते हो formula to add total marks and internal assessment marks as 10 for all students, then जो formula होगा वो होगा this. If you paste the formula for another set of rows using relative referencing, the values would automatically change, but not when you use absolute reference. If you paste the formula for another set of rows using relative reference, तो जो value है वो automatically change हो जाएगी, but not when you use absolute reference. The value of cell K3 did not change, but the column for total marks did change. तो absolute में values change नहीं होती, चाहे आप copy paste कर लो उस formula को कहीं भी. Now mixed referencing. Mixed referencing एक clever technique होती है जो Excel formulas के अंदर use की जाती है, जो combine करती है flexibility of relative references with the stability of absolute references. Mixed referencing के अंदर या तो column letter या फिर row number precede होगा by a dollar symbol to lock the part of the cell address, and ये allow करता है हमें to create formulas जो adjust करते हैं correctly when copied, ensuring accurate calculations across your spreadsheet. Now references to other worksheet. You can refer to cells in other worksheets within the same workbook just as easy as you can refer to cells in the current worksheet. So for example, अगर आपको enter करना है एक reference to cell A2 in sheet 2 into cell A1 in sheet 1, तो आप क्या करोगे, select करोगे cell A1 को sheet 1 में and type करोगे equal sign. Then click the sheet 2 tab and click on cell A2 and then press enter key. When you press enter key, तो जो sheet 1 है वो now active हो गई. Select cell A1 and you will see that ये contain करता है formula equals to sheet 2 A2 and the exclamation point separate करता है worksheet portion को of the reference from the cell portion. Functions. Excel functions are formulas that have already been set up, यानी कि they can be used to do both simple and complex calculations and they take arguments and give out values in return. तो rules क्या होते हैं functions के? All Excel functions must begin with equal sign. Function name must be valid Excel name. Functions must be followed by opening and closing parentheses and most of the functions must contain an argument within it.
नाउ कैटेगरीज क्या है फंक्शन की? पहला होता है मैथमेटिकल फंक्शंस, यानी कि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं नंबर का या फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एटसेट्रा। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के अंदर हम फाइंड करते हैं हाईएस्ट, लोएस्ट, एवरेज एटसेट्रा एंड नंबर इन अ सेट ऑफ नंबर्स। और डेट एंड टाइम फंक्शंस, यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं डे, मंथ एंड ईयर फॉर द गिवन डेट एज वेल एज आवर, मिनट एंड सेकंड फॉर द गिवन टाइम। लॉजिकल फंक्शंस में हम चेक करते हैं कंडीशन जैसे x इज ग्रेटर देन 5 एंड टेल वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। टेक्स्ट फंक्शंस, यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स व्हिच आर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जैसे हेलो, फ्रेंड, कंप्यूटर एटसेट्रा। यहाँ पे फाइंड करते हैं हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जॉइनिंग टू स्ट्रिंग्स, सर्चिंग फॉर वन स्ट्रिंग इनसाइड अनदर एटसेट्रा। और मैथमेटिकल फंक्शंस में हमारे पास आ जाते हैं जैसे सम रेंज, यानी कि इसका पर्पस होता है कि हमारी रेंज का एक सम निकाल के देना, विच इज जैसे हम इनपुट कराया सम 2468 तो आउटपुट हमें मिलेगा 20। प्रोडक्ट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल्स, जैसे प्रोडक्ट हमने इसका किया तो 60। नाउ मॉड, ये होता है नंबर डिवीजर, ये रिटर्न करता है हमें रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवीजर, जैसे आउटपुट 1। सॉर्ट, ये रिटर्न करता है हमें स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, फॉर एग्जाम्पल sort 64 is 8। Now int number, ये राउंड करता है नंबर को टू एन इंटीजर वैल्यू, लाइक 8.20 is 8। Now power number, ये रिटर्न करता है काउंट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सिलेक्टेड रेंज, लाइक power 2,3 एंड आउटपुट इज 8। काउंट, ये रिटर्न करता है काउंट ऑफ नंबर वैल्यूज इन अ सिलेक्टेड रेंज, फॉर एग्जाम्पल इनपुट में हमने कराया काउंट 5, 19 और 15 तो आउटपुट मिलेगा 3। राउंड number of digits, ये रिटर्न करता है number after rounding to the specified digit which is this। now abs number, ये रिटर्न करता है absolute value of the given number, like abs minus 9 is 9। in functions we can also use cell address in the place of values। function must be written in a specific way, जिसको हम बोलते हैं syntax। basic syntax जो होता है function का वो होता है equal sign and name of the function, for example sum and one or more arguments। now arguments contain करते हैं कुछ ऐसी information that you want to calculate। in the example the function would add the values of range, जैसे हमने क्या इक्वल्स टू सम एंड ये हमने रेंज दे दी, तो सम हमारा फंक्शन नेम हो गया, इक्वल्स टू साइन से हम बिगिन करते हैं और ये हमारी आर्गुमेंट हो गई। नाउ सेल रेंज थी A1 टू A10। ऑटो सम, सम फंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला फंक्शन है फॉर विच एक्सेल प्रोवाइड करता है ऑटो सम बटन और फॉर्मूला स्टेप इन द एडिटिंग ग्रुप। नाउ ऑटो सम एक क्विक टूल है जिसको हम यूज करते हैं सम कराने के लिए ऑफ नंबर स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम। और देखो क्लिक करना है सेल पे दैट विल कंटेन द फंक्शन, देन क्लिक ऑन ऑटो सम बटन, रेंज सेलेक्ट करनी है जिसपे आप परफॉर्म करना चाहते हो सम ऑपरेशन को एंड देन प्रेस द एंटर की टू डिस्प्ले द रिजल्ट। If you want to calculate sum of multiple cells that are not in a range, separate है each cell address by comma, तो आपको करना है sum और इस तरीके से comma से separate कर देना है हर एक cell address। Average equals to average, ये आपको एक average देगा of all the numbers in the range of cells, for example the average marks of students। यहाँ पे हम करेंगे average में हम range दे देंगे B2 to I2 will give you average of all the numbers in the cell from B2 to B12। मैक्सिमम फंक्शन डिस्प्ले करता है लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द रेंज विच इज मैक्सिमम, और इसका सिंटेक्स होता है इक्वल्स टू मैक्स और हमने रेंज यहाँ पे दे दी। नाउ विल डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर अमंग द सेल्स फ्रॉम J2 टू J8। मिनिमम, ये हमें डिस्प्ले करता है स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द रेंज एंड इसका भी सिंटेक्स सेम होता है, बस फंक्शन के नेम पे मिनिमम आ जाएगा जो डिस्प्ले करेगा स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द रेंजेस फ्रॉम J2 टू J6। Do you know Excel has over 450 built-in functions to explore and we can also carry out above functions using AutoSum feature। To do so आपको select करना है cell जहाँ पे भी आप display कराना चाहते हो output of the function, then click on the drop down arrow of the AutoSum option and choose desired function from the displayed list। Date and time functions, Excel के पास एक powerful set होता है of built-in functions to help you work with dates times within your spreadsheet। यहाँ पे कुछ common ones हैं जैसे फंक्शन टुडे, ये रिटर्न करेगा आपको करंट डेट, जैसे टुडे का हमने फंक्शन यूज किया तो ये आपकी करंट डेट देगा। मंथ, क्या आपको करंट मंथ बताता है। ईयर, ये आपको करंट ईयर बताता है। देन डे टू डे, ये आपको बताएगा कि कौन सा डे है आज, विच इज करंट डे। देन नाउ, ये रिटर्न करता है करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। आर, ये रिटर्न करता है आवर्स फॉर फ्रॉम अ गिवन टाइम। मिनट, ये रिटर्न करता है मिनट फ्रॉम अ गिवन टाइम। नाउ लेट्स
Let us the date functions in Excel by performing the following steps. सबसे पहले आपको लिखना है टाइप इक्वल्स टू टुडे फंक्शन इन अ सेल, प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, और जब आप एंटर की को प्रेस करोगे तो करंट डेट अपीयर हो जाएगी इन द सेल. Now we can also give reference of a cell containing date to the month function. Similarly हम use कर सकते हैं year day functions को to get the year and day from the date respectively. नाउ जो कॉमन फंक्शंस होते हैं जैसे लाइक सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, इनका यूज किया जा सकता है यूजिंग द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ऑटो सम बटन. एंड टू यूज अदर फंक्शंस हमें क्लिक करना होता है मोर फंक्शन ऑप्शन पे. इज अ एक्टिविटी जहाँ पे योर क्लास इज प्लानिंग अ फील्ड ट्रिप एंड द बस कॉस्ट ₹150, स्नैक्स ₹10 पर स्टूडेंट एंड म्यूजियम टिकट्स आर ₹7 पर स्टूडेंट. यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक एक्सेल स्प्रेडशीट टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रिप based on different numbers of students attending and use formulas to calculate estimated cost per student based on varying student numbers. Let's revise the chapter. एक्सेल यूज करता है लेबल्स को मतलब टेक्स्ट को, वैल्यूज यानी कि नंबर्स एंड फॉर्मूलाज यानी कि कैलकुलेशंस बिगिन विद इक्वल्स टू. फॉर्मूलाज परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस ऑन सेल डेटा लाइक फाइंडिंग द सम और एवरेज. फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज फॉर कॉमर्स बट फॉर कॉमन टास्क जैसे सम, एवरेज, टुडे. सेल रेफरेंस जैसे A5 tells the formula where to find data. रिलेटिव रेफरेंसिंग चेंज करता है जब भी कोई फॉर्मूला कॉपी होता है, व्हाइल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज करता है डॉलर सिंबल को एंड फिक्स्ड रहता है. नाउ एक्सेल ऑफर करता है हमें बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, डेट एंड टाइम एंड मोर. यूज ऑफ टुडे फंक्शन गेट द करंट डेट एंड नाउ फंक्शन फॉर द करंट डेट एंड टाइम. Formulas and functions make Excel more powerful tool for organizing and analyzing data. Let's do the exercise. First is tick the correct option. What data type is used for numbers in Excel? Values. What key do you press to enter formula in a cell? Tab key. Now which function calculates the total sum? What does the equal sign indicate the Excel a formula? So to start a function in Excel with an equal sign. Next is answer the following questions in one word. Name a function that finds the largest number in a range. Max. Maximum function. Key toggle cell reference between absolute and relative. F4 key. What is a series of continuous cells called in Excel? Range. What type of cell reference change when copied across cells? Relative. What function returns the current date? Today. Let's do true false. Average function calculates the total sum. False. Cell reference can be relative, absolute or mixed. True. Formulas can only perform one operation at a time. True. Functions are built-in formulas that specify complex calculations. True. So students, this was your complete chapter about formulas and functions in Excel. I hope the chapter is clear to you. Do revise your chapter once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.